after 5 months of renovating narrow, divided spaces into a philosophical school of thought is studied or developed hard enough to be convincing. We just choose which direction to start in based on aesthetic preference. Yeah, I'm going to get this spicy. I think it's true. I think that a lot of the time when we find a philosopher or a writer convincing, we're really experiencing is somebody putting into words something that we already feel. To believe about a particular thing. But when we're talking about a general area of philosophy, or whether a general world Hello. have to do it in a more elegant and formulaic way before. And that's why I think the most brilliant of consciousness, and she's of the view that consciousness might be fundamental. That is to say that the stuff that a bunch of numbers like 1 and 14 and 3 billion, you added them together in the right order, you somehow get a check. Like, it just doesn't make sense. That kind of thing can't emerge from that other kind of... So one solution to this mystery that the panpsychist offers is that, well, consciousness doesn't emerge from matter, because matter itself just is consciousness. That is to say, if I ask what this microphone is made out of, I'll say, well, it's made out of metal. Well, what's the metal made out of? Well, it's made out of atoms. Well, what are the atoms made out of? Well, subatomic particles. Well, what are the subatomic particles made out of? Well, we don't really know. Some people think tiny vibrating strings. Some people think quantum probability distributions or whatever. The panpsychist says that the answer is consciousness. That is भैया रुको जाना मत, मैं अभी आया हूँ one problem that panpsychism does seem to solve is this issue of how you get one thing emerging from another categorically different thing. But hold on a second, if everything in the universe is made up fundamentally of consciousness, then why is my brain so different from other material objects? Like, why can I do things that the chair can't? I experience emotions like joy or sorrow. I can be creative. I can perform intellectual tasks. If my brain is made up of the same conscious stuff as the chair, why can I do that and not the chair? Well, this is where we come back to the comment. Notice the commenter said that all consciousness is identical because it doesn't include personality, memory, intellectual ability, etc. Consciousness consists only of the pure awareness behind those things. This is something I spoke to Annika Harris about. The idea that we often confuse the kind of thing which our brains do, like memorizing things or experiencing joy or experiencing pleasure, which require consciousness for consciousness itself. These things, these experiences, these intellectual activities are not themselves consciousness. They require consciousness. You need to be conscious in order to remember something. The memory is not the same. And maybe one of the things that's we make philosophy of mind is assuming that consciousness requires complexity. That is, if consciousness is something really complex like the brain, that's why it shares the brain. The brain is much more complex. So when you talk about thinking consciousness doesn't require complexity, but some of the things that consciousness can do, like memory, like feeling longing, or like enjoying music, do require complexity. That would be the thing that's special about the brain. I wonder. It's consciousness, because consciousness is fundamental. चल बेटा सेल्फी ले It's लो. consciousness can do. For example, you can remember being conscious. भैया आप जाइए, इस बंदे के शौक नया भी है. भाई तू लाइव क्लोज कर दे यार प्लीज.
क्यों? आपको क्या दिक्कत है? तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुम मत देखो। Can you speak in Bengali? Sorry, I can't. I don't know a lot. আমি কিচ্ছু জানি না। Hello, for CR7. Hi. भैया डेड ड्रीमर से बच कर रहना। ओके। अच्छा, MPPSC का सिलेबस अच्छा है। यह ऐसे पे सबसे ज़्यादा GDP वाला कंट्री कौन सा है? USA। अभी तो US है। एशिया में चाइना है। अमेरिका वर्ल्ड में, एशिया में चाइना है। और ऐसा तो US है। इंडिया का महाराष्ट्र। हाँ ब्रो, कैन आई जस्ट आस्क यू अ क्वेश्चन? यस यू कैन। वन डे इंडिया। भैया बहुत धीमे बोलते हो। हाँ, सब लोग जाग जाएंगे। भाई तुमसे UPSC के लायक आंसर पूछूं क्या? हाँ पूछो।
अफगानिस्तान में सरकार का ले जाए ऊपर से ले जाए ऊपर तो छोड़ दी छोड़ो ये छोड़ो ले जाओ ऊपर पूरों को खड़ी कर आओ हमें कहीं अफगानिस्तान की सरकार का नाम तालिबान क्यों है? क्योंकि तालिबान का मतलब होता है स्टूडेंट। कैसे हो बढ़िया भैया। कौन से देश पे सबसे ज़्यादा कैटल्स है? कैटल्स इंडिया, वेनेजुएला, वेनेजुएला। ओए बिल्ली क्या हाल है? Let's say I'm not what I am. I'm ruled by a population and people around me, so they have the so-called control over me. They can make me angry and happy. I don't have control over it. और भी है वेनेजुएला में सबसे ज़्यादा KTL होती है। KTL क्या है? BC उसको पढ़ना नहीं होता, रिप्लाई भी करना होता है। तो इसमें मैं क्या रिप्लाई करूँ? मुझे उससे कुछ पर्सनल बात करनी है। भैया वो बिल्लू लो इसमें क्वेश्चन क्या था? वंडरर इसमें क्वेश्चन क्या था भाई? ऐसा थोड़ी होता है। ये पूछ रहा है कि तालिबान क्यों और कैसे करा। अच्छा तो वो एक आइडियोलॉजी को मानते हैं जिसमें तालिब मतलब होता है स्टूडेंट, तो इसीलिए वो तालिबान हो गए, मतलब रूल ऑफ स्टूडेंट। अब स्टूडेंट वो लोग शरीयत के हैं तो शरीयत का कानून वहाँ चलेगा, इसीलिए तालिबान नाम। ऑर्गेनाइजेशन है तालिबान, मतलब सारी चीज़ से चेले। इसमें अमेरिका हाथ था। और हाँ, अमेरिका ने सोवियत यूनियन से लड़ने के लिए तालिबान को वेपन्स दिए थे और बनाया था। उसे ये बोल देना म्याओ 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 इन हिंदी, ओए छोटू की कल आ जाना मैदान में। अच्छा एक्चुअली अमेरिका ने तालिबान को पाल पोस के बड़ा किया था सोवियत से लड़ने के लिए, बट सोवियत 1991 में ख़त्म हो गया तो उसका काम कुछ बचा नहीं। तो 1960 में उसने अफगानिस्तान पर ही कब्जा कर लिया। उठा के पट दूंगा। अच्छा आज़ादी के बाद पहले न्यूज़पेपर की हेडलाइन में क्या लिखा था? हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में इंडिया स्ट्रेस्ड विद डेस्टिनी, ऐसा कुछ था शायद। भाई उसी तरह ट्रेनिंग दे देना, कल पीटने वाला है। और पीट देगा तुम्हें कोई।
सिम्बा। तो इंडिया इंडिपेंडेंट, ब्रिटिश रूल एंड ऐसा कुछ लिखा होगा फिर। हिंदुस्तान टाइम्स में, हिंदुस्तान टाइम्स, हिंदुस्तान। ब्रिटिश रूल एंड सिम्बा हूँ, मेरी गली का काम दिल्ली का पता है, तो हूँ उसका नाम अच्छा। सिम्बा, मंगल प्रभात, और इसके नीचे लिखा था बापू की चैन तपस्या सफल। हिंदी में लिखा था सर। क्या भाई, मैं 12 पास हुआ हूँ इस साल। अच्छा, इससे तूफान को चीर कर आता है वो, भूकंप लाता है वो हर एक बिल्ली का राजा है, राजा है, राजा है। चलो 20 मिनट हो गया, लाइव एंड करने जा रहा हूँ। बाय बाय।